Welcome to Mathsci Educator's YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying biology with your favorite Hinal ma'am. Hello students, welcome to Mathsci Educator. Today we are going to take 12th standard biology or chapter number 11, that is the principle and processes. In this chapter we have completed about their introductory part, a principle of biotechnology and tools of recombinant DNA technology. After that we have completed processes of recombinant DNA technology. Now after finishing all this chapter, we have conclude or start our question answer. That is the most important in this topic. So our first question, that is, how can the desired product formed after genetic engineering be produced on a commercial scale? हम किस तरह से हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया है उसको कॉमर्शियल स्केल पे हम उसको ले सकते हैं. सो द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस कलेक्टिवली नोन एज अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको जब हम मार्केट में लॉन्च करने चाहते हैं उससे पहले दे हैव टू processed properly and go through some steps, series of steps for their sterility, to maintain their sterility, for their quality. Okay, so their process, all that process are collectively known as the downstream processes. Now before it made into the final process involved in a downstream process, they have to be first separation and purification step. सेपरेशन मीन्स कि हमें उसको जो भी उसके कंटेंट है उसके अलावा के जो भी कंटेंट्स है, सपोज वी हैव टू रिक्वेस्ट इंटरेस्ट इन अवर प्रोडक्शन ऑफ एनी एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स के अलावा जो भी प्रोडक्ट्स उसके कल्चर मीडिया में आते हैं उससे हमें उसको सेपरेट भी करना है एंड वी हैव टू प्योरीफाई इन अ प्योर फॉर्म. We have to purify that antibiotics in a pure form. So before go through a downstream processing means for that quality controls and quality check, we have to first separate that product and purify from the culture. Now second question, what is the role of enzyme ligase in a genetic engineering? Enzyme ligase का क्या role है? So the answer is enzyme ligase act as a molecular structure which help in joining two piece of DNA. जैसे कि restriction enzyme के बारे में हमने जो पढ़ा है तो उसमें क्या है, that restriction enzyme having the ability to cut the DNA strand. Likewise in exact to their opposite, that is a enzyme ligase. तो वो क्या करेगा, they will help to join two piece of the DNA. The joining process require ATP, as you know कि जब हम किसी को ब्रेक करते हैं तो उसमें एनर्जी लिबरेट होती है, बट whenever we combine anything we require energy, that is over here in the form of ATP, adenosine triphosphate, and as it derive the energy to construct the phosphodiester bond between the cohesive end. वो क्या करेगा, जो दो एंड्स है उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है बाय यूजिंग द एटीपी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? द आंसर इज दैट if a recombinant DNA is inserted within the coding sequence, हम किसी जो भी recombinant DNA है उसको कोई coding sequence, मतलब कि ऐसे sequence जो coding कर रही है, जो express हो रहा है, ठीक है. So if we insert any our DNA into the coding sequence, for example beta galactosidase, so that result in a inactivation of that particular enzyme, that are refers to as a इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. मतलब हमने इंसर्ट किया और वही एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया. ओके, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव द ब्लू कलर कॉलोनी. जो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज है, अगर हम उसको एज इट इज रहने देते हैं दे विल प्रोड्यूस अ ब्लू कलर colonies, but when we insert our recombinant DNA, that result into the insertional inactivation and the colonies do not produce any of that color. Okay, so that is about the insertional inactivation. Now next question, that is
हाउ इज जीन Z यूज्ड एज अ मार्कर। जो ये हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का है उसी के रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज हाउ दिस जीन Z यूज्ड एज अ मार्कर। So leg Z gene that are code for the enzyme beta galactosidase, and if a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of this enzyme, that result into inactivation of that leg Z gene. That because of that things, the bacterial colonies whose plasmid does not have a insert product gives the blue color, but when that plasmid contain a recombinant DNA, okay, it produce only a white color, means no such color production is there in that particular colony. Okay, तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. Now our next question, what is bioreactor? Bioreactor क्या है? What are the advantage of stir tank bioreactor over a shake flask? स्टीयर टैंक मतलब कि जो कंटिन्यूअसली जिसमें स्टीयरिंग हो रही है, और सेक फ्लास्क, and show that bioreactor. So bioreactor are a large vessels in which raw materials are biologically converted into the specific protein using either microbial cell, plant cell, or any animals or human cells. What are the advantage of the shake flask? It provides a optimal condition for achieving a desired product by providing optimum growth condition. For example temperature, pH, ये जो भी optimum condition में है, मतलब कि उस बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर कौन सा है जब वो हायर प्रोडक्शन कर रहा है, पर्टिकुलर pH कौन सा है तब वो हायर प्रोडक्शन कर रहा है. So we will provide that optimal condition in this reactor. Second thing, small volume of the cultures can also be able to withdraw periodically. हम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में हम उस जो भी कल्चर्स हो रहे हैं उसको विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द बायोरिएक्टर एज एन सैंपल टू टेस्ट देयर सैंपल, कितनी क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी क्वालिटी में ये प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब देखने के लिए. इट ऑल्सो हैज एन एजिटेशन सिस्टम, for example temperature control system, from a form control system and pH control system. These all the things are included into the shake flask bioreactor. Now next one, mention the important properties of which a good vector must possess. जो वेक्टर है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए so that we can consider that vector as an most important good vector. Okay, so first property, that is the size. The size of the vector must be small so that they are easy to purify and easy to isolate. तो उसकी जो साइज है वो कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल होनी चाहिए. सेकेंड, origin of replication. तो they having a sequence of base pair where replication start, and any piece of the DNA that linked to this sequence can be made to replicate within its host cell and thus control their copy number of linked cell. तो उसके पास जो origin of replication है वो भी ऐसा होना चाहिए कि जहां पे हम हमारा जो डीएनए है अगर उसको लाइगेट करते हैं तो वो इजीली रेप्लिकेट हो सकता है और वो उसको कंट्रोल भी कर सकता है. Okay, now third property, that is about the selectable markers. So markers is a gene which help in selecting those host cell which contain the vector or which not, or eliminating the non-transformant. Common selectable markers include the gene coding resistance to antibiotics. Markers का काम क्या है कि जो हमें distinguish कर सके between recombinant and non-recombinant host cell के बीच में. ठीक है, सो यहाँ पे हम एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स. क्लोनिंग साइट, द वेक्टर शुड हैव अ फ्यू और एटलीस्ट वन यूनिक रिकॉग्निशन साइट टू लिंक द फॉरेन एलियन डीएनए. ओके, एक ही उनके पास रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए कि जिसके वजह से हम सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके एक ही कट लगा सकते हैं, तो जिसमें हम इजीली हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसको लिंक कर सकते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट अनेबल अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द वेक्टर. ओके, सो आई होप आपको आज के इस वीडियो में समझ में आया होगा.
Thank you. So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Mathsci Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.